बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। सो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। तो आइए डॉपलर इफेक्ट का थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। लेट f be the frequency of sound of source, f dash be the apparent frequency of sound as heard by observer, v be the speed of sound in air, v naught be the velocity of observer or listener, and vs be the velocity of the source. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी में है, और ये हमारे पास एक कार है वो भी स्टेशनरी में है, और ये कार जो है एक साउंड को एमिट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास f, और वो साउंड जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है विद ए स्पीड v। आप याद रखिए, अगर ये कार भी स्टेशनरी हो और ये ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी हो, तो इस ऑब्जर्वर को जो है इसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इस साउंड की, वही फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को फील होगी। मींस एफ डैश आर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर ये सोर्स साउंड को एमिट करता है विद स्पीड v, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज v, एंड दिस सोर्स मूव टूवर्ड्स दिस स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड vs, then frequency observed by this person will be what? So that will be f dash equal to f into v over v minus vs. Means if the source move toward the stationary observer with speed vs, then frequency observed by this observer, which is f dash equal to f into v over v minus vs, where v is the speed of sound and v is the speed of the source. In this case, f dash is greater than f, means the feeling frequency will be greater than or apparent frequency greater than real frequency. Similarly, if the observer is stationary and the source is move away from the observer, then frequency observed by the person f dash equal to f into v over v plus vs. In this case, the apparent frequency f dash is less than real frequency. Case number 3, if the source is stationary and the observer is moved toward the stationary source, then frequency observed by this observer f dash equal to f into v plus v naught divided by v, where v is the speed of sound, v naught is the speed of observer, f is the frequency, real frequency when the source and observer is stationary, and f dash is apparent frequency. In this case, again, f dash, the apparent frequency greater than real frequency. Case number 4, if the source is stationary and the observer move away from the source, then frequency observed by this person f dash equal to f into v minus v naught divided by v. In this case, again, f dash is less than f. Case number 5, if the source and observer are moved towards each other, then frequency observed by this person f dash equal to f into v plus v naught divided by v minus vs. In this case, again, the apparent frequency will be greater than real frequency. Case number 6, when source and observer are moved away from each other, then frequency observed by this person f dash equal to f into v minus v naught divided by v plus vs. Case number 7, if the observer and source are moved in parallel, but observer जो है वो आगे हो और source उसका पीछा कर रहा हो, तो then this observer observe frequency f dash equal to f into v minus v naught divided by v minus vs. And case number 8, if the source and observer are parallel, लेकिन हमारे पास source आगे हो और observer उसका पीछा कर रहा हो, then frequency observed by this observer f dash equal to f
इंटू वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। सो ये हमारे पास 8 केस बन गई। केस नंबर 9, ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर हमारे पास ये एक सर्कल हो और इस सर्कल में एक सोर्स मूव कर रहा हो और हमारे पास ऑब्जर्वर इस सेंटर पर हो, तो याद रखिए इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होगी उस ऑब्जर्वर के लिए क्या होगी, ज़ीरो होगी। मींस फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज अकर नहीं होगी। मींस एफ डैश इक्वल टू एफ, or there will be no change in frequency of sound here if the source is situated at the center of the circle along which the source is moving. And case number 10, if the source and observer are on the same vehicle and the sound is reflected a stationary object, say a wall, toward which the vehicle is approaching, the frequency of sound as heard by the observer is f dash equal to v plus vs divided by v minus vs multiplied by f naught. मिसाल के तौर पर इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वॉल है, ये हमारे पास एक कार है और ये कार जो है एक साउंड को एमिट कर रहा है और वो साउंड जो है किस रफ्तार से मूव कर रहा है, वी रफ्तार से, और कार जो है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड द वॉल विथ स्पीड वी एस। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है इस कार में और ये जो है ये आवाज़ जो है साउंड है वो आगे जाएगा, वार के साथ टकराएगा और वापस आएगा। तो इस पर्सन को इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी फील होगी वो क्या होगी, एफ डैश इक्वल टू वी प्लस वी एस डिवाइड बाई वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट। रिमेंबर, if wind blow with a speed vw in the direction of propagation of sound, then replace v by v plus w. If wind blow in direction opposite to the propagation of sound, then replace v by v minus vw. क्या मतलब? मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने पढ़ा है केस नंबर 1 में, यहाँ पर देखिए केस नंबर 1 को, ये वाला मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सोर्स है, वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है विद स्पीड वी एस और ये एक साउंड को एमिट कर रहा है और वो साउंड की हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है, उसकी स्पीड है हमारे पास v और इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है f। तो इस पर्सन को जो फ्रीक्वेंसी फील होगी, ऑब्जर्व होगी, वो क्या होगी, एफ डैश इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई वी ओवर वी माइनस वी एस। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पेन हो और वो पेन जो है वो एयर को मूव कर रहा है, वो एयर को डिस्टर्ब कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ हमारे पास ये स्पीड ऑफ साउंड है जो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और हमारे पास जो वाइंड है वो मूव कर रहा है फ्रॉम left to right, means the wind move also in the direction of speed of sound. Then the apparent frequency formula f dash equal to what, f, v को हम रिप्लेस करेंगे v प्लस वी डब्ल्यू और यहाँ पर v को हम रिप्लेस करेंगे v प्लस वी डब्ल्यू। लेकिन हमारे पास वाइंड जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के अपोजिट मूव कर रहा हो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, देन वी रिप्लेस दिस v बाई v माइनस VW and this V by V minus VW। तो याद रखिए वाइंड के जो MCQs है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो उससे हमको इसमें आसानी होगी। Rotating source, when source move toward the observer then the frequency here will be maximum। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सर्कल है, इसमें एक सोर्स मूव कर रहा है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। when the source is at this point A, mean the source move towards the observer, then the apparent frequency will be increased and the frequency observed by this person f dash equal to what, v divided by v minus vs into f। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम देखें, when the source move in this direction mean the source move away from the stationary observer,
So at point B, the frequency observed by this person f dash equal to what? V divided by V plus Vs multiplied by f. एंड केस नंबर 3, अगर हमारे पास ऑब्जर्वर जो है इस सर्कल के सेंटर पर हो, इस फिगर को देखें, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है जो इस सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये सोर्स की जो वेलोसिटी है वो इस ऑब्जर्वर के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो याद रखिए, जब सोर्स की डायरेक्शन और ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है उसके दरमियान 90 डिग्री हो, तो फिर उसको जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इसके लिए वो ज़ीरो होगी। मींस इस पर्सन को फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज महसूस नहीं होगी। मींस इफ ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल, then there will be no change in frequency of sound here. Now transverse Doppler effect. If source is moving in a direction making angle theta with respect to the observer, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक ऑब्जर्वर है और एक सोर्स जो है वो A से B की तरफ मूव कर रहा है। मीन्स तो इस ऑब्जर्वर को इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, इस ऑब्जर्वर को उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है इस ऑब्जर्वर को वो किस तरह दिखाई देगी, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर बाय ऑब्जर्वर ओ एट रेस्ट एफ डैश इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस कास थीटा इनटू एफ। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर हो, सोर्स इस पॉइंट पर हो और एक साउंड को इमिट कर रहा हो विद एंगल थीटा, करेक्ट, तो ये पर्सन जो है उसको आवाज़ की फ्रीक्वेंसी किस तरह दिखाई देगी? इस तरह, एफ डैश इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस कास थीटा, वी द स्पीड ऑफ साउंड एंड वी एस इज द स्पीड ऑफ द सोर्स। लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर ये सोर्स इस तरह मूव कर रहा हो और पॉइंट सी पर पहुंच जाए, तो यहाँ पर पॉइंट सी और ऑब्जर्वर के दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। सो थीटा को हम 90 में रिप्लेस करेंगे। सो इट मीन्स एफ डैश विल बी व्हाट? देन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल टू एफ। और हमें मालूम भी है कि जब सोर्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन और ऑब्जर्वर के दरमियान एंगल 90 हो, तो फिर उसको चेंज महसूस नहीं होगी। मीन एपरेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर सोर्स इस पॉइंट पर पहुंच जाए, देन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय दिस पर्सन विल बी व्हाट? मीन्स एंगल इज इंक्रीज फ्रॉम 90 डिग्री। सो द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द पर्सन इज दिस वन, एफ डैश इक्वल टू वी डिवाइड बाय v plus v is cos theta into f. So this is the apparent frequency for observer when the source is at point B, and this is the apparent frequency for observer when the source is at point A, and f dash equal to it, this is the apparent frequency for observer when the source is point C. तो ये तीनों इक्वेशन को याद रखिए और इसके बेस पर हम MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन फॉर नो डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट कौन से सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है? व्हेन सोर्स एस एंड लिसनर एल बोथ आर एट रेस्ट, देन डॉपलर इफेक्ट विल नॉट वैलिड। व्हेन सोर्स एस एंड एल मूव इन सच ए वे दैट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एल रिमेन कांस्टेंट, देन डॉपलर इफेक्ट will not valid. When source and L are moving in a mutual perpendicular direction, then Doppler effect not valid. And last one, if the velocity of source and listener is equal to or greater than the velocity, then Doppler effect not valid or not seen. तो ये हमारे पास 4 condition है, and these 4 condition the Doppler effect not will be seen. Doppler effect in light. Light wave also show Doppler effect. If a light source is moving away from a stationary observer, then the frequency of light wave appear to be decreased
and wavelength appear to be increased and vice versa. If the light source or the observer is moving with a velocity v such that the distance between them is decreasing, then apparent frequency of the source will be what? F dash equal to 1 plus v over c divided by 1 minus v over c under the root into f, where f frequency emitted by a source, v is the relative velocity of approach, and c is the speed of light. If distance between the light source and the observer is increasing, then apparent frequency of the source will be what? F dash equal to 1 minus v over c divided by 1 plus v over c. ये जो है, if the distance between the light source and the observer is increasing, then we use this equation. But if the distance between the light source and the observer decreasing, then the apparent frequency F dash equal to 1 plus v over c divided by 1 minus v over c under the root into f. रेड शिफ्ट एंड वायलेट शिफ्ट क्या होता है? If the light source is moving away from the observer, the shift in the spectrum is towards red and it is called red shift. If it is moving toward the observer, the shift is toward the violet and it is called violet shift. And violet shift or red shift, del lambda equal to lambda dash minus lambda equal to v over c into lambda. इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन है, या यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है जो ब्लू लाइट को एमिट कर रहा है. तो इसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की क्या होगी? एफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू. बट व्हेन दिस बल्ब मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, then its frequency will be decreases. हमें मालूम है कि ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, करेक्ट, और रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कम है. तो इस पॉइंट पर ये बल्ब जो है अब ब्लू दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अब इस पॉइंट पर ये बल्ब इस पर्सन को दिखाई देगा रेड, क्योंकि इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है इफ बी दिस इज़ ग्रेटर देन, इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कम है और कम फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी है? रेड की है. सो इट मीन्स इफ ए ब्लू लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देन वेरी फार अवे इट लुक लाइक रेड. लेकिन याद रखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर भी कोई बल्ब हो, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर एक बल्ब हो और वो बल्ब जो है हमारे पास ग्रीन है, इस पर्सन को इस बल्ब दिखाई दे रहा है ग्रीन, बट व्हेन द बल्ब मूव टुवर्ड द पर्सन और द ऑब्जर्वर, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज. मीन्स व्हेन इट रीच टुवर्ड द ऑब्जर्वर, फाइनली द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व दैट द बल्ब इज़ वायलेट, क्योंकि इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है बल्ब की, अपनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि इस पॉइंट पर ही हमारे पास क्या है? ग्रीन या रेड है. और जब ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और हमें मालूम है कि स्पेक्ट्रम में वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो फाइनली इट फाइंड दिस बल्ब लुक लाइक वायलेट फॉर दिस ऑब्जर्वर. तो इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई भी एक बल्ब हो, ब्लू हो, वो ऑब्जर्वर से मूव अवे जा रहा हो, तो फाइनली ये बल्ब जो है इस ऑब्जर्वर को रेड दिखाई देगा. और अगर यहाँ पर भी कोई बल्ब है, उसकी इस पर्सन को दिखाई दे रहा है रेड, ग्रीन या येलो, लेकिन जब ये पर्सन की तरफ मूव करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस पर्सन को अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती नज़र आएगी, और इस पॉइंट पर जो है ये बल्ब वायलेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये कलर कन्वर्जन फ्रॉम ब्लू टू रेड और फ्रॉम रेड टू वायलेट, दिस इज़ नोन एज रेड शिफ्ट एंड वायलेट शिफ्ट. अब आइए डॉपलर इफेक्ट के MCQs को डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास MCQs है, MCQ नंबर 8.81. स्टेटमेंट कुछ इस तरह है
A police car with a frequency 8 kHz is moving with a uniform velocity 36 km per hour toward a tall building which reflects sound waves. The speed of sound wave is 320 meter per second. The frequency of the siren here by the car will be what? तो ये ऑलरेडी हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है पॉइंट 10 पर कि हमारे पास जब भी कोई सोर्स हो वो किसी वॉल की तरफ या बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा हो और एक साउंड को इमिट कर रहा हो और वो साउंड जो है किसी भी वॉल से रिफ्लेक्ट हो जाए और वापस वो लिसनर की तरफ आ जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम किस तरह मालूम करेंगे. सो द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल टू वी प्लस f dash equal to v plus vs divided by v minus vs into f naught. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास है 320, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में. सो वी obtain velocity of source as 10 meter per second and the apparent frequency f dash equal to what? 320 plus 10 divided by 320 minus 10 multiplied by 8 kilohertz. By simplifying this we obtain 8.5 kilohertz. So the correct option is option A. MCQ number 8.82. Two aeroplanes are moving toward each other. One of them blows a horn. The person in the other plane hear the sound. The apparent pitch will be what? Increase. हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी हमारे पास कोई भी एक सोर्स हो और एक ऑब्जर्वर हो और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा सुनाई देगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. MCQ number 8.83. If a source is moving away from a stationary observer with velocity of sound, what frequency will be observed? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास जो है एक ऑब्जर्वर है और वो स्टेशनरी लिसनर से मूव अवे जा रहा है. किस रफ्तार से? विद वेलोसिटी ऑफ साउंड से. तो उसको जो फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी वो क्या होगी? तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी लेस. वी नो दैट एफ डैश इक्वल टू एफ इंटू वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस. अगर वी एस की जगह हम वी को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे सो द रिजल्ट एफ डैश विल बी डिक्रीज देन एफ. सो याद रखिए when the source move away from the observer then frequency will be decrease. 8.84. With what velocity should an observer approach a stationary sound source so that apparent frequency of sound should appear 1.2 times the actual frequency, where v is the velocity of sound? 0.3v, 0.2v, 2v and 3v. क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, वो एक स्टेशनरी साउंड सोर्स की तरफ किस रफ्तार से मूव करे कोई उसको जो फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी और रियल फ्रीक्वेंसी का कितना होगा? 1.2 टाइम्स. सो एफ डैश इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी इंटू एफ. एफ डैश की जगह हम पुट करेंगे 1.2 एफ, वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी इंटू एफ. इसको सिंप्लीफाई करें, एफ को एफ के साथ कैंसिल करेंगे. वी नॉट इक्वल टू 0.2 वी. So it means if an observer move with a speed 0.2 v toward a stationary source, then the apparent frequency observed by the person must be equal to 1.2 times to the real frequency. So the correct option is option B. MCQ number 8.85. The railway engine blow a vessel of frequency 512 Hz. It is moving toward a platform with a speed of 36 km per hour. The apparent pitch or frequency of sound here by a stationary observer on the platform will be what? 0 Hz, 512 Hz, less than 512 Hz, greater than 512 Hz. We know that when a source moves toward a stationary observer, then frequency observed by the observer greater than the real frequency. So the correct option is option B. MCQ number 8.86.
A source of sound of frequency 90 Hz is approaching a stationary observer with a speed equal to 1 over 10 the speed of sound. The frequency heard by observer will be what? So very simple. हमें मालूम है कि जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो तो एफरेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? एफ डैश इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट. अब क्वेश्चन में कहता है कि सोर्स की जो वेलोसिटी है वो 1/10 है, 1/10 टाइम टू वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर है. तो वी इसकी जगह हम v/10 को पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड फाइनली वी ऑब्टेन 100 हर्ट्ज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ number 8.87. An observer moved towards a stationary source sound with velocity 1/5 the velocity of sound. What is the percentage increase in the apparent frequency? Very simple. हमारे पास observer है, वो stationary source की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो apparent frequency फार्मूला है वो क्या है? F dash equal to V plus V naught divided by V into F naught. अब observer की जो velocity है वो बराबर है 1/5 time to velocity of sound. So by simplify this we obtain f dash equal to 6 f naught divided by 5. Now increase in frequency is what? F dash final frequency minus f naught initial frequency divided by f naught multiplied by 100%. So अगर यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करें f dash equal to 6 f naught over 5, इसको सिंप्लीफाई करें स्टेप बाय स्टेप, finally we obtain 20%. So frequency increase 20% when an observer move with a velocity v over 5 toward a stationary source. The Doppler effect is applicable for light wave, sound wave, matter wave, both A and B. So correct option is D. MCQs हमने already discuss किया है. MCQ number 8.90. A source emit a sound of frequency 400 Hz, but the listener here is to be 390 Hz. Then the listener is moving away to the source? No. The source is moving toward the listener? No. The listener is moving away from the source? Correct. क्योंकि हमें मालूम है कि रियल फ्रीक्वेंसी में कमी उस वक्त आएगी जब लिसनर मूव अवे हो फ्रॉम द सोर्स और सोर्स मूव अवे हो फ्रॉम द लिसनर. करेक्ट ऑप्शन इज सी. MCQ 8.91. A source of sound of frequency 600 Hz is placed inside water. The speed of sound in water is 1500 meter per second and in air is 300 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer who is standing in air will be what? 200 Hz, 3000 Hz, 120 Hz, 600 Hz. So the frequency of sound does not change with medium because it is the characteristic of source. So the frequency will be same. The correct option is D. MCQs 8.92. When an observer moves toward a stationary source with a certain velocity, he observes an apparent frequency f. When it moves away from the source with the same velocity, the observed frequency is 0.8 f. If the velocity of sound is v, then the speed of sound will be what? So, when the observer moves towards stationary source, then f dash equal to what? V plus V naught divided by V into F naught. लेकिन यहाँ F dash की जगह हमने F को पुट किया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि apparent frequency क्या है वो F है. When the source move away, then F dash equal to V minus V naught divided by V into F naught. लेकिन इस F dash की जगह हम पुट करेंगे 0.8 F क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है when move away the frequency 0.8 F. तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई 1 और 2. सो एक दूसरे से डिवाइड करें 2/1 एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें. वी obtain V naught equal to V over 9 or the velocity of the observer is equal to 1/9 time to the velocity of
sound. MCQs 8.93. The wavelength is 120 centimeter when the source is stationary. If the source is moving with a relative velocity 60 meters per second toward the observer, then the wavelength of the sound wave reached to the observer with velocity 330 meters per second will be what? So we know that f naught equal to v over lambda, or f naught equal to 275 hertz, and f dash equal to v over v minus vs, because the source is moving toward the observer, into f naught. So v is 330 minus 60 multiplied by 275. By simplifying this, we obtain 336 hertz. This is the apparent frequency, and a corresponding wavelength lambda equal to v over f dash. So 330 divided by 336, we obtain 0.98 meter or 98 centimeter. MCQs 8.94. A car sounding a horn of frequency 1000 hertz passes an observer. The ratio frequency of the horn noted by the observer before and after passing is 11:9. If the speed of sound is v, then the speed of the car will be what? So frequency before crossing equal to what? V over v minus v is into f naught, and frequency of sound after crossing v over v plus v is into f naught. अगर इक्वेशन 1 को 2 से हम डिवाइड करें, so we obtain this one, and this ratio is given. The ratio before crossing and the ratio after crossing is 11/9. v plus vs divided by v minus vs. इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स के लिए. फाइनली वी obtain 1/10v. So the correct option is B. MCQs 8.95. A car sounding its horn at 480 Hz move toward a high wall at a speed of 20 meters per second. The frequency of the reflected sound heard by the man sitting in the car nearest will be what? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है क्विक रिव्यू में 9.9 पर. f dash equal to v plus vs divided by v minus vs into f naught. When we have a source and the source have an observer, and the source move towards a wall and emit a sound, then the sound reflect from the wall, and the observer on the source observe frequency f dash equal to v plus vs divided by v minus vs into f naught. So simple value put करें, so we obtain 540 Hz. Option C. And MCQ number 8.96. A small source of sound move on a circle as shown in the figure. An observer is standing at O. F1, F2, F3b, the frequency here when the source is at A, B and C respectively. Then F1 greater than F2 greater than F3, F2 greater than F3 greater than F1, F1 equal to F2 greater than F3, and D, F2 greater than F1 greater than F3. So very simple. इस पॉइंट पर देखें, at this point the source move towards the observer, so at this point f2 will be larger than f1 and f3, this one, and at this point the frequency will be small because the source is move away from the observer, but at this point the source is perpendicular to the observer. At this point no change in frequency, so the correct option is what? Frequency f2 greater than f1 greater than f3. This option is correct. Or f2 greater than f3 greater than f1. Correct option is B. ऑप्शन बी पर देखिए, f2 बिल्कुल हमारे पास f3 से ज़्यादा है और f3 जो है वो f1 से ज़्यादा है, क्योंकि एट दिस पॉइंट f dash equal to f and at this point f dash less than f. So the correct option is option B.
MCQ number 8.97. Doppler shift in frequency does not depend upon the frequency of wave produced, the velocity of the wave sound, the velocity of the observer, distance from the source to the listener. तो याद रखिए डॉपलर इफेक्ट जो है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू लिसनर पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ओनली द रिलेटिव वेलोसिटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी and explain as Doppler effect is change in frequency for which velocity of source or observer necessary, not distance. Means if source and listener are at 10 meter apart, then the real frequency f hertz. If they are 20 meter apart, no motion, then still real frequency will be f hertz. Means Doppler effect independent distance between source and observer. MCQ number 8.98. A source of sound emit wave with frequency f hertz and speed v meter per second. Two observers move away from this source in opposite direction with a speed 0.2 v. The ratio of frequency heard by the two observers is what? हमारे पास ये एक सोर्स है और ये ऑब्जर्वर ए जो है मूव कर रहा है राइट साइड को, ऑब्जर्वर बी मूव कर रहा है लेफ्ट साइड को, लेकिन याद रखिए दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस सोर्स वो सेम है. करेक्ट. तो दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज जो है हर पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी हर पॉइंट इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी इस पर फ्रीक्वेंसी सेम होगी. व्हेन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विथ सेम वेलोसिटी देन एट ईच एंड एवरी पॉइंट frequency for both observer will be same, so the ratio will be what? 1:1. MCQs 8.99. The source producing sound and observer both are moving along the direction of propagation of sound wave. If the respective velocity of sound source and observer are v, vs and v naught, then apparent frequency here by the observer will be what? तो इसको हमने ऑलरेडी क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है. करेक्ट ऑप्शन इज डी. MCQ number 8.100. A person feel 2.5% difference of frequency of a motor car horn if the motor car is moving to the person and the velocity of sound is 320 meter per second, then the velocity of the car will be what? So we know that when source move towards observer, f dash equal to v over v minus v into f. Let initial frequency 100% or 1. Final frequency increase 2.5% means 100 plus 2.5 or 102.5. 102.5 hertz. So v minus vs f dash equal to vf or vf dash minus vf vs f dash. So इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें. फॉर वेलोसिटी ऑफ सोर्स के लिए वी ऑब्टेन 8 मीटर पर सेकंड. A source of sound emitting a note of frequency 200 Hz move toward an observer with a velocity v equal to the velocity of sound. If the observer also move away from the source with same velocity v, the apparent frequency here by the observer will be what? So very simple. Doppler effect will be observed only if relative velocity of source and listener is non-zero. Here relative velocity of source and observer is 0, so f dash equal to f mean 200 Hz. MCQ number 103. Doppler effect will not be applicable when the velocity of sound source is what? So option D, equal to that of velocity of sound and greater than velocity of sound. इसको हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है डॉपलर इफेक्ट लिमिटेशन में. MCQ number 8.104. An observer while going on a scooter hears a sound of two sirens of same frequency from two opposite direction. If they travel along the direction of one of the siren, then what? तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी और हमारे पास जब भी टू फ्रीक्वेंसी हो स्लाइटली डिफरेंट हो तो फिर हमारे पास बीट्स को प्रोड्यूस करेगा. सो द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व लिसन बीट्स. करेक्ट ऑप्शन इज बी.
MCQ number 8.105. If source and observer both are relative at rest and speed of sound is increased, then frequency hereby observed will be what? When they are in relative rest, then there will be no change. So correct option is D. 8.106. Blue color source is seen red. इसको हमने already quickly में discuss किया है. We know that frequency of red color less than orange, less than yellow, less than green, less than blue, less than indigo, less than white. So blue color source is seen red. Blue color जो है हमको रेड दिखाई देगा क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम है. ब्लू कलर हमको रेड दिखाई देगा जब ब्लू कलर is move away from the observer. So correct option is A. Source is moving away from the observer, but blue color look like violet if blue color move towards the observer. This also discussed in quick review. MCQ number 8.107. A source and an observer move away from each other with a velocity 10 meters per second. With respect to the ground, if the observer finds the frequency of sound coming from the source is 1950 Hz, then actual frequency of the source will be what? हमारे पास source और listener है, एक दूसरे से move away जा रहे हैं, इसकी apparent frequency हमारे पास 1950 Hz है, तो real frequency को मालूम करें. So this is the relation between apparent frequency and real frequency when both move away from each other. तो यहाँ पर simple value put करें, simplify करें, we obtain 2068 Hz. This is the real frequency of the sound of the wave. MCQ number 8.108. What should be the velocity of sound source moving toward a stationary observer so that apparent frequency is double the actual frequency? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक सोर्स है जो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है. इसकी वेलोसिटी को हम कितना रखें कि ऑब्जर्वर को उसकी फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की वो डबल दिखाई देगी. सो एफ डैश इक्वल टू 2f, इसको एफ के साथ कैंसिल करेंगे, सॉल्व करें पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स वी ऑब्टेन v/2. सो इट मीन्स इफ सोर्स मूव with the velocity half of the velocity of sound toward a stationary observer, then the frequency absorbed by the stationary observer will be double. Doppler effect is applicable for moving bodies. One is moving, other is stationary. For relative motion, none of these. For Doppler effect, relative motion is necessary. So the correct option is C. MCQ number 8.110. When engine pass near to a stationary observer, when apparent frequency occur in the ratio 5/3, if velocity of engine will be what? So apparent frequency f dash when source move toward a stationary observer, this one. Apparent frequency f dash when source move away is this one. एक को दूसरे से डिवाइड करें and this is given that f dash and f double dash equal to what? 5/3. v plus vs over v minus vs cross multiplication करें, step by step solve करें and we obtain velocity of the source is 85 meter per second. Due to Doppler effect, the shift in wavelength observed is 0.1 angstrom. For a star producing wavelength 6000 angstrom, the velocity of precession of star will be what? So we know that Doppler shift equal to v over c into lambda. यहाँ पर v को हमने मालूम करना है, v equal to c del lambda by lambda. So del lambda is 1 angstrom and lambda is 6000 angstrom. Putting the values and simplify, we obtain 5000 meter per second or simple 5 kilometer per second. MCQ number 8.112. A bat flies at a steady speed of 4 meter per second, emitting a sound of frequency this one. It is flying horizontally toward a vertical wall. The frequency of the reflected sound as detected by the bat will be what?
So again, f dash equal to v plus v naught over v minus v is into f naught. We know that when sound reflects from a wall, then its frequency f dash equal to what this one. So यहाँ पर simple value को put करें, simplify करें, we obtain option C 92.1 kilohertz. MCQ number 8.113. An observer moved toward a stationary source of sound with a speed 1/5 of the speed of sound. The wavelength and frequency of source emitted are lambda and f. The apparent frequency and wavelength will be what? So we know that when the observer moved toward a stationary source, f dash equal to v plus v naught by v into f. v naught की जगह v और 5 को put करें, simplify करें 1.2 f. So this is the apparent frequency. Motion of observer doesn't affect the wavelength reaching the observer, hence wavelength remain same. So the correct option is D. Frequency change to a frequency equal to 1.2 f and wavelength remain as it is lambda. Correct option is D. MCQ number 8.114. A person going away from a factory on a scooter at a speed of 36 km per hour. Listen to the siren of the factory. If the main frequency of the siren is 600 Hz and a wind is blowing along the direction of the scooter at 36 km per hour, the apparent frequency is hereby the person will be what? So very simple. हमारे पास ये एक फैक्ट्री है. एक पर्सन मूव अवे फ्रॉम द फैक्ट्री with a speed of 36 km per hour or 10 meter per second, and wind also blow in the direction of observer with velocity what 36 km per hour or 10 meter per second. So हमें मालूम है जब भी हमारे पास वाइंड हो then apparent frequency जो फार्मूला है f dash equal to v minus v naught over v into f. So we replace v by v plus w. So f dash equal to v plus vw minus v naught divided by v plus vw. इस v को हमने रिप्लेस किया v plus vw. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड. vw क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाइंड. तो हमें मालूम है कि जब साउंड और वाइंड की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो तो दोनों को हम v को हम रिप्लेस करेंगे इससे. बट इफ वाइंड आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन वी रिप्लेस v minus vw. So here the velocity of the observer and the velocity of the wind both are in same direction. So we put v plus vw. Putting the values, simplify, we obtain 583 Hz. So correct option is option C.